Okay, so let's talk about कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन कल जो हमारी क्लास हुई थी एंड वानी वाज द ओनली पर्सन हु वाज देयर yesterday. So I will just brief you all what we did yesterday. We were talking about few of the theories of socialization and of understanding, not theories of particularly as socialization, but ऐसी थ्योरीज जो आपको आइडेंटिटी के बारे में समझाते हैं, जो आपको ये समझाते हैं दैट फॉर एन इंडिविजुअल communication कितना ज़रूरी है, not just professionally but personally also. There are a lot of things which in relation to communication are taken for granted by most of us. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जिसको कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. फॉर ग्रांटेड लेने से मतलब जैसे हम ये कभी नहीं समझ पाते दैट द रिलेशनशिप, दैट द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी शेयर विद आवर फैमिली मेंबर्स, it is based on the communication that we have with them. It is not based on just the fact that we are born in the same family and we share the same blood. It's not about that. There is a constant need of communicating, of explaining yourself, of understanding the other person, of trying to find a common path, because sometimes you have to understand the other person and sometimes you expect to be understood by the other person. So both of these things are very much important in sustaining the relationship that you have with your family members, and then with the society around you, with the people around you. Now if you say that you're an introvert person and you don't go out much, then what about the society? Society doesn't impact you just for the reason that you go and talk to them. Society impacts you, and the way you communicate with society is much more than the just verbal communication that you could have with somebody in your neighborhood. For example, you have one festival coming. So how your society responds to that festival? Do you celebrate it together? Like for Holi, do you go to each other's place and you celebrate? If let's say that you have this idea of visiting each other's place and celebrating Holi together, and one time on this festival of Holi, the neighborhood people, they don't come and visit you, so this will be a problem for you. And why it will be a problem? Because this will be something that you're not comfortable with, you are not known to this idea, so you would like to know if they have some kind of issue, if they have some kind of problem. So this is a very personal and simple example, but to a greater extent you can see that our relationships with our society people, with our family members, and much more important than that, with ourselves, depends on this communication that we have with society. Why with ourselves also? Because what we think is our idea is not our idea, it is borrowed. When I'm saying borrowed मतलब ये नहीं है कि आपने नॉट टेकिंग इट टू द लिटरल सेंस कि आपने उधार लिया है किसी से. बोरोड मीन्स कि जब आप पैदा होने के बाद बढ़ते हैं और यू आर लर्निंग फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम पीपल अराउंड, तो आप उन्हीं से सीखते हैं कि किस चीज़ को कैसे समझा जाता है, कौन सी चीज़ जो खाने में है वो एक्सेप्टेबल है. सो इफ़ यू आर बोर्न इन अ फैमिली वेयर नॉन वेजिटेरियन फूड इज ओके एंड कॉमन, you find it to be very common, and you don't have a problem with it. But if you are born in a family where vegetarian food is only allowed, then you have problem with that kind of food. And why do you have, is this your idea, or you were born with that idea of not eating or eating non-vegetarian food? It's not like that. The point is that you have been in that kind of environment from where you have learned different things. Even the idea of gendered roles, the idea that you have to learn cooking, you have to learn how to take care of the house, you have to learn how to sweep the floor. ये सारी चीज़ें भी जो जेंडर्ड आइडियाज़ हैं, ये भी हमारे को हमारे फैमिली से ही सीखने को मिलती हैं. इफ़ यू हैव टू डू यू हैव सम काइंड ऑफ मोर फिजिकल वर्क एट होम, जैसे आपको कोई भारी चीज़ उठवानी है, सिलेंडर उठवाना है, या ऐसा कोई काम करना है, then you generally wait for your brother or for your father. I'm not saying always, I'm saying generally. So don't take it personally in any sense, but generally we do that. We see that females will wait for some male members to come and do the work. Why this idea is there? Why do you expect them to do?
बिकॉज ये हमने सीखा है कि इसी तरीके से चीजें होती आई हैं. एंड दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो कम्युनिकेशन है, बहुत सटल कम्युनिकेशन जो आपका सोसाइटी का साथ जो डेली बेसिस पे होता है, अगर आप यहाँ पर चेंजेस लाना शुरू करते हैं तभी आपकी सोसाइटी में बदलाव आते हैं. If you see that it is okay for you to, being a girl of the house, if it's okay for you to talk to your brother about your monthly issues, then the point comes कि आप वहां पर एक communication जो है उसको open up कर रहे हैं. And if your brother is a person or your father is a person who can openly talk to you about your personal issues in spite of you being of opposite gender, तो वहां से ही सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू होते हैं. क्यों होते हैं? एक फैमिली से ही सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू, क्योंकि वो जो चेंजेस आपके साथ आ रहे हैं, आप उनके उन चेंजेस के साथ, अपने उन व्यू पॉइंट के साथ, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करोगे, और उसकी वजह से सोसाइटी में भी वो नए आइडियाज जो हैं वो डेवलप होंगे, इवॉल्व होंगे. एंड दैट इज व्हाई यू नीड, बीइंग अ कम्युनिकेटर, बीइंग अ पर्सन who is going to be into encoding messages professionally, you need to understand that if you want to make a film which you want to have more and major influence on people in terms of feminism, in terms of Western and Eastern ideas, in terms of equality of economies, that is poor and rich people, in terms of basic facilities available to village areas, anything, any social issue that you have in your mind and you want to take up that in your film that you will be making, be more conscious about how you will be using this subtle communication in your film, how you will be showing that your character will be influencing people around him or her, not by saying dialogues but just by simply doing few actions. और इसी ये चीजें जब हम दिमाग में रखते हैं तो हमें समझ में आती है कि हम समाज को बदलने का काम सिर्फ एक रिपोर्ट से नहीं, हम उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जो बहुत ही सटल लेवल पे, उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं. And that is the reason why we are studying socialization in this very beginning of your course, so that from right now you understand that if you want something to change in society, start it from yourself, start it from your family. And you don't have to be stubborn about it, you don't have to go and tell your parents that do this and do that. You just have to make sure that every day, slowly and subtly, you are talking about it, you are making them hear the idea. And one day things will be much comfortable for them because they have been into this conversation of new change that you would like to bring. So it will not be an alien idea for them when you will say that finally you are doing this. Okay. Hello. Hello. Yes. Okay. So yesterday, what we did is that we were talking about this, and we were talking about the agents of socialization. Agents means that कौन से ऐसे factors हैं, कौन से ऐसे tools हैं जिनके थ्रू ये socialization, जिनके activity से socialization जो है वो पूरा होता है. उनमें सबसे पहले आती है आपकी family. आपकी फैमिली सबसे पहला वो एरिया है या वो जरिया है जिसके थ्रू आप सोशलाइज होना, यानी कि सामाजिक होना शुरू करते हैं. उससे पहले तक यू आर जस्ट a normal, in biological term, you are just a homo sapien. You are not a social being, but you learn how to be a social being when you come in contact with your family. And then you come in contact with your neighborhood, then you come in contact with your peer group, like you go to school and you talk to your classmates, you talk to children around you, maybe elder and younger, and you see your teachers behaving in certain ways, and from there you learn a lot of things. And when you grow up, then you come across even a bigger peer group, or you can say your known or acquaintance circle, because then you make friends in your college, universities, in your offices. You make friends, especially in today's time, you make friends through social media also.
somebody who is not a part of your college or university, but you know that person, you know them through Instagram, through Facebook, through WhatsApp, or through any other app. And then you have been into conversation, you have been listening to their ideas, and you have been talking to them about your ideas, your society, your culture, your viewpoints about certain things. And they do bring changes in what you think, and you also affect their opinions about things that they have for their particular culture or society. So this is the other agent that we have. And then you have agent in terms of the you could say the more overpowering agent that you have, that is media. For example, I gave you the idea of social media. Not just this, you have media in terms of print, in terms of TV, in terms of films, in terms of radio, in terms of any other platform which is bringing information to you. It could be a banner, it could be flaxes, it could be any other mode of communication, maybe folk communication, theater, or simple gatherings that you have, group communication, public communication, going to rallies, sitting in groups, or attending conferences and webinars. So these all things, bringing the idea of interaction, bringing the idea of communication together into one place, that is how you get answer for your agents of socialization. And the biggest point that connects communication and socialization is the fact that socialization is the process which is possible only by the communication between the society members. सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि समाज के जो लोग हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन के द्वारा ही सोशलाइजेशन पॉसिबल है। और ये जो सोशलाइजेशन है इसका इफेक्ट पड़ता है आपकी सोच पे, इसका इफेक्ट पड़ता है आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है कि आप अपने करियर को लेके किन एक्शंस को करने में कंफर्टेबल हैं, किन को करने में कंफर्टेबल नहीं है, आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। एंड दैट इज हाउ इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग दैट इज देयर अराउंड यू। ओके। Okay, so now we have a few theories to discuss regarding the idea of self, regarding the idea of stages of identity. And now, why we are talking about stages of identity, the reason is this, that सबसे बड़ा पार्ट सोशलाइजेशन का ये नहीं है कि समाज का समाजीकरण नहीं होता है, एक इंडिविजुअल का समाजीकरण होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक सोशल पर्सन, एक सोशल बीइंग बनता है। सोसाइटी सोशल बीइंग नहीं बनती है। सोसाइटी मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, these group of people are socialized and they live in a society. So the idea of self, the idea of individual or personal identity is important for socialization. I'll repeat again, socialization जो है वो समाज का नहीं होता है, socialization एक individual का होता है। एक individual, एक normal human being जब सामाजिक बनता है, यानी कि socialized होता है, तो उस process को हम socialization बोलते हैं। और socialized होने से मतलब क्या है कि वो अपने society के तौर तरीके को सीखता है। और तौर तरीकों में सिर्फ ये नहीं आता कि आप क्या खाते हैं पीते हैं या आपके क्या एक्टिविटीज या रिचुअल्स हैं, इन सब चीज़ों में ये भी आता है कि आप करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपने घर में जो एक फैमिली का जो आइडिया है उसको लेके, इन सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आप किन चीज़ों को सही, किन चीज़ों को गलत मानते हैं, किन को एक्सेप्ट करते हैं, किन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, किन के प्रति आप रिजिड ज़्यादा हैं, किन के प्रति यू आर फ्लैक्सिबल, ये सारी चीज़ें आपके समाजीकरण से ही आती हैं। एंड हाउ डू यू सी opposite gender, how do you see people, those who are not from your section of society, for example they belong to some other caste, they belong to some other religion, they belong to some other race, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन से आती हैं। और इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हम एक इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हम
तीन थ्योरीज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। एक थ्योरी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, यानी कि J.H. मीड, मीड इज MEAD, दैट इज हिज सरनेम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ही वाज अ साइको एनालिस्ट ऑल्सो। और psychoanalyst is somebody who talks about the unconscious of a person's mind. And then we have another person, that is John Piaget. So all these people are from psychological background. They have a lot better understanding about the psychology. एंड साइकोलॉजी हम यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं सोशलाइजेशन के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल अपने आप को, अपने आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें, और अपने आसपास जो समाज है उसको कैसे समझता है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो हैं उनके आइडियाज़ बहुत अलग अलग तरह के रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर हम उनकी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को डिस्कस करें, तो मैं बहुत ही सिंपल लेवल में आपको उनकी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, किसी भी एक आम इंसान की जो आइडेंटिटी है, उसको उन्होंने कैसे बताया है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ डिवाइडेड द सेल्फ, यानी कि आप अपने आप में जो है उसको उन्होंने तीन हिस्सों में बांटा है। ही हैज़ डिवाइडेड द सेल्फ इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज द आईडी, द अदर इज ईगो, एंड द लास्ट वन इज सुपर ईगो। एक आईडी है, आईडी मतलब सिंपल आई फॉर इंक एंड डी फॉर डॉग, आईडी, बस इतना ही लिखते हैं इसको, जैसे आपकी ईमेल आईडी का आईडी होता है। और ईगो एंड सुपर ईगो। यहाँ पर जो ईगो है उससे मतलब ये नहीं है जैसे हम बात करते हैं ईगो को लेके, दिस इज नॉट एनीथिंग नेगेटिव हेयर। यहाँ पर ये जो तीन चीजें हैं ये आपको ये बता रही हैं कि एक आपके दिमाग में एक सुपर ईगो होती है। सुपर ईगो से मतलब कोई ब्रेन का हिस्सा नहीं है जिसको आप टच कर सको। सुपर ईगो से मतलब है आपके दिमाग में एक आइडिया होता है कि दुनिया या समाज जो है वो किन चीजों को मान्यता देती है और किन चीजों को मान्यता नहीं देती। एक आपकी आईडी होती है, आईडी मतलब एक आपका दिमाग का वो हिस्सा है या वो पॉइंट है या वो थॉट है जो कि अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको समझता है, जो रियल आपकी इंटेंशंस हैं, जो रियल आपके मोटिव्स हैं। और ईगो जो है उसका काम है कि इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए और आप जो इंडिविजुअल है उसको अलाउ करे कि वो हर चीज को आराम से कर सके। इसमें हर चीज आती है, चाहे वो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज हो, चाहे मेंटल एक्टिविटीज हो या सोशल एक्टिविटीज हो, ये सभी इन तीनों चीजों में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट your interest is your id says that you would like to have more money in your account, एंड यू नो दैट आप सिर्फ अगर सही तरीके से पैसा अर्न करते हैं जॉब करके या कोई काम करके तो ही ठीक है। यू कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम समबडी, क्योंकि समाज उस चीज को सही नहीं मानता है, उसको चोरी बोला जाता है या उसको आप एक क्राइम की नजर से देखते हैं। बट योर आईडी वॉन्ट्स टू हैव मोर मनी एंड मोर कंफर्ट इन लाइफ। और यही वजह है कि जिन लोगों की आईडी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी अपनी डिजायर्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, सो दे एंड अप डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज दे डू नॉट गिव much importance to what the super ego says in their brain. They give more importance to id, the desires that the person has. यहाँ पर उनकी ईगो जो है वो वीक पड़ जाती है और इट गिव्स अप ऑन सुपर ईगो एंड इट सरेंडर्स टू द आइडियाज ऑफ आईडी। सो सिगमंड फ्राइड का आइडिया ये है कि हमारे दिमाग में ये तीन तरह के आइडियाज हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है आपके जो कम्युनिकेशन है आपके समाज के साथ, आपका समाज आपके प्रति कितना रिस्ट्रिक्टिव, कितना रिजिड है, और उसके साथ साथ आपकी इंटरेक्शन किस तरह की है। और जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा उतना बेहतर उतना इजी आपकी ईगो के लिए बन जाता है आईडी और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बिठाना। इसके बाद एक और थ्योरी है जो कि है जॉन पिगेट की। जॉन पिगेट की जो थ्योरी है उसमें वो आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यानी कि एक इंसान के जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल में वो डिवाइड करते हैं। पहला लेवल जो है वो बहुत ही सिंपल सा है जिसको वो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। आप लोगों को नाम
याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझिए। सेंसरी मोटर स्टेज से मतलब यह है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को सिर्फ यही पता होता है कि उसके बेसिक जो बॉडीली एक्शंस हैं वो किस तरह के हैं, यानी कि खाना खाना है या सोना है, यही काम होता है। दैट छोटे 2 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो कुछ बोल के, अपनी बात कह के, समझा के, किसी तरह के कॉन्वर्जेशन में नहीं आता, इतनी सी या कोई काम नहीं करता है, सिर्फ इतना सा ही एक्टिविटी होती है कि खाना होता है, सोना होता है, थोड़ा बहुत जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं खेलने वेलने की वो ही होती हैं, उतना ही जरूरी है। तो वो अपने सेंसेस पे काम करते हैं, इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। दूसरी स्टेज जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 साल से 7 साल की उम्र तक की। इस स्टेज में आप अलग अलग सिंबल्स के मीनिंग समझने की शुरुआत करते हैं। आपको ये समझ में आता है कि आप क्या हो, आप अपने आप को अपने चेहरे को आईने में देख के अपना खुद के फेस की जो आइडेंटिटी है उसे समझते हैं। सो थिंक अबाउट दिस कि आप अपने फेस को कभी भी खुद नहीं देख सकते हैं। आपको अपना फेस देखने के लिए या तो आईने की जरूरत पड़ती है, या आप अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं। दूसरे जैसे आपको बोलेंगे कि आप ऐसे दिखते हो, ऐसे लगते हो, उस नजर से आप देखते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड दैट हैव more positive people around you, so that you have more positive attitude towards your own identity. ओके, सो ये उम्र में आप अपने आप को समझते हैं, अपने आसपास की जो चीजें हैं उन्हें समझते हैं। और इसके बाद आती है एज, दैट इज 7 to 11 ईयर। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बोला जाता है। इससे पहले वाली है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि इस एज में आके आप कॉन्क्रीट एक्शंस जो हैं वो करते हैं। आपकी स्कूलिंग भी है वो स्ट्रांग हो जाती है, आप जो बाकी बच्चों के साथ यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आप बहुत सारी चीज़ों में you get involved into more concrete activities. And then comes the stage that is beyond the age of 12, where you get into stage of formal operations। आप formal operation में आ जाते हैं। formal operation यहाँ क्यों लिखा है, because अगर हम पुराने आइडियाज, ट्रेडिशनल आइडियाज के हिसाब से देखें तो ये वो एज होती थी व्हेन पेरेंट्स विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हाउ यू विल सेटल डाउन इन योर लाइफ। और आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो सेटलिंग डाउन ये आप 9th 10th में क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, आप किस फील्ड में जाने वाले हैं, बताओ।